Good afternoon and welcome back to Money Control live stream. You're watching the Closing Bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. Well, the pressure on stocks continued for the second straight day today, both Sensex and Nifty ending in the red. Quick take at how the market fared today. Sensex and Nifty ending close to about 0.5% lower. And among the big losers of the day were mainly shares from the banking, pharma, metal and realty sectors. Auto and IT shares managed to buck the trend and held ground. The India Volatility Index was up by close to about 3% to 13.46. Among the prominent gainers in the Nifty, you had Divi's Lab, Ultratech Cement, Tech Mahindra, Power Grid and Hindalco among the prominent gainers, whereas among the losers you had Adani Enterprises, Cipla, BPCL and Britannia. Well, Yatin, again a down day for the market. Yes, absolutely, Santo. And if you look at the FII figures, January के महीने में 41,000 crores का sell figure. Feb में also, there is a chance that we might be 15-20,000 crores down in terms of the FII flows. So I think जो FII selling है और जो global conditions है उसके वजह से थोड़ा बहुत pressure बाजार में बना है और Santo somehow banking delivered a very strong third quarter numbers. बट कोई भी बैंक आप रिजल्ट के बाद देखिए तो कोई फॉलो बाइंग नहीं आया. इनफैक्ट PSU बैंक्स, इफ यू लुक एट द प्री बजट अदानी सागा विच हैपेंड एंड द PSU बैंक्स फेल, दे हैवंट बी एबल टू रिकवर. तो अगर आप SBI की भी बात करें तो कोई बड़ा पार्टिसिपेशन 17,500 से लेके 18,000 की जर्नी में नहीं रहा. तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बैंक्स का भी है. और आज बैंक निफ्टी भी देखें आप तो करीब 600 पॉइंट आपको गिरती हुई नज़र आ रही है. तो थोड़ा बहुत प्रेशर बैंकिंग में है ही. इंट्राडे में 600 पॉइंट का गिरना मतलब बहुत ही बड़ा. आप इंट्राडे देखिए, सुबह मजबूत खुला और डे बंद होते होते लगभग लो पे बंद होता हुआ निफ्टी बैंक इंडेक्स. Well, Yatin, that is what happens when you push the stock prices up far too high, and I think that is what seems to have happened in the case of banking stocks also. All these stocks had a fairly good run, but by the time it was time for the quarterly earnings, already the stock prices had captured most of the positives, and that is why most likely you are not seeing any kind of follow-up buying there. And the outlook, if you look at the commentary from analysts tracking the sector, the growth now even for banking stocks is expected to moderate. But overall for the market, if you see again, according to Bloomberg estimates, there have been more downgrades than upgrades. Almost 56% of the Nifty stocks have seen a downgrade, and a somewhat similar number for most of the NSE 200 stocks also. So, Yatin, if you were to go by the saying that eventually stock prices are a slave to earnings, then by that maxim, it's no surprise really that at this point prices are under pressure. Yes, absolutely. And आप IT सेक्टर देखिए तो वहाँ आपको करेक्शन देखने को मिला, बैंकिंग में करेक्शन देखने को मिला. एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि शायद ग्रोथ मॉडरेट होगी और ये देखा जाएगा कि कैसे हम बाज़ार को आगे जाके लेते हैं. बट क्लियरली जो डोमेस्टिक फ्लोज है उसके सामने FI फ्लोज की जो सेलिंग है, जो सेलिंग प्रेशर है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बाज़ार में प्रेशर आता हुआ नज़र पड़ रहा है. आपका पहला स्टॉक? Well, it is IRCTC. The stock was down about 1%, a little more than the margin by which the Sensex and Nifty fell today. Yatin, not long back this stock used to be the toast of fund managers and retail investors alike, but after that massive sell-off that we saw sometime in October 21, the stock has never really gone back anywhere close to those levels, and it's still a good 40% off those highs seen at that point in time. Now, according to Money Control Pro analyst Madhuchanda Dey, the stock is unlikely to reach those glory days anytime soon, and the main reason for that is that internet ticketing, which is the biggest source of revenue for IRCTC, that segment is has been under pressure for a while now. Partly also that the penetration is very high at close to about 82%. So, from here on the growth is only likely to be gradual. And secondly, revenues actually from its catering and water business, that's been doing well, but again the margins here are not as lucrative as those seen in the internet ticketing business. That's the second factor. And thirdly, during the pandemic, a lot of those unreserved tickets, they had been converted into second sleeper class, and IRCTC was earning a good revenue from that as well. But now
that with again reversion back to the unreserved class, that stream of revenue too has been drying up, and so all these put together make IRCTC a steady performer, and overall the margins should remain steady at current levels, which is why you are unlikely to see those kind of premium valuation multiples that had been witnessed during the heydays of October 21. एब्सोल्युटली। और जब से यहाँ गवर्नमेंट ने एक ऑफर फॉर सेल किया है सेंटो, प्राइस मुझे लगता है बिल्कुल से ही मोमेंटम यहाँ आपको दिक्कत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से 800 रुपये के ऊपर OFS यहाँ हुआ था, और एवर सिंस देयर यू नो वी आर नॉट लुकिंग एट द स्टॉक विच इज़ डन प्रिटी मच ऑन द हायर साइड। बहरहाल सिप्ला ये स्टॉक ऑफ द डे आप कह सकते हैं, क्योंकि सिप्ला की अगर हम बात करें तो आज स्टॉक F&O का टॉप लूज़र था, निफ्टी का टॉप लूज़र था। इसका कारण काफ़ी सिंपल था। इनका जो इंदौर का प्लांट है पीतमपुर में, इसको फॉर्म 483 US FDA के इंस्पेक्शन के बाद आया, और ऑब्जर्वेशंस आए करीब 8। अगर आपको याद है तो सिप्ला का जो गोवा का प्लांट है, यहाँ भी एक इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद यहाँ एक वार्निंग लेटर आया था US FDA के जो नॉन कंप्लायंसेस उसके कारण। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंदौर प्लांट देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है, क्योंकि जो यहाँ नेचर ऑफ फाइलिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्स लॉन्चेस यहाँ से फाइल्ड हैं, खास करके एडवेयर करके एक इनहेलर है, वो इस पर्टिकुलर साइट से आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई पड़ सकता था, लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वेशंस आए और क्योंकि नॉन कंप्लायंस था, यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर आपको बनता हुआ नज़र आया। आप अगर इंट्राडे की बात करें तो 7-8% तक स्टॉक इसी वजह से नीचे चला गया। ऑब्वियसली ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ बाय रेटिंग ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये एस्केलेट हुआ यहाँ से तो अर्निंग्स को रिस्क है, ऐसा ब्रोकरेजेस मानते हैं। Clearly, and this is again one of those stocks which has been trying to make a comeback and partly seem to have succeeded, but again the latest setback would certainly make many investors think twice. Absolutely, and you know this was one of the trader friendly, investor friendly stock, and if you look at Cipla in the pharma pack, it has been a huge outperformer for the last 12 months. तो कहीं ना कहीं ये जो आउट परफॉर्मेंस है, क्योंकि लोगों को लगता था कि अच्छे लॉन्चेस आपको US मार्केट्स में दिखेंगे। साउथ अफ्रीका में इनका एक इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, वो भी अच्छा कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में तो बढ़िया स्टोरी शेप अप ही हो रही है, लेकिन ये जो इंदौर की फैसिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंस्पेक्शन की गाह जाने के कारण शायद थोड़ा बहुत प्रेशर आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आता हुआ दिखाई पड़े। सेंटर Well, the last stock on my watch list is Shriram Finance. The stock managed to hold ground in an otherwise weak market. One of the triggers for this performance was largely the rating from Morgan Stanley. Morgan Stanley has upgraded the stock to overweight and also has a price target of 1,580. Now, according to Morgan Stanley, the latest quarterly numbers were quite strong. Morgan Stanley has also raised its earnings estimate for the company, and Morgan Stanley has said that the valuation discount both to its own historical average as well as to those of its peers, that has widened. So, it makes the stock a reasonably safe bet in terms of the risk reward ratio at current levels. However, there is one concern which Morgan Stanley has flagged off, and that is mainly the supply overhang in the stock. Now, because of the three-way merger, now the public shareholding in Shriram Finance has gone up. Piramal Enterprises is holding about close to 8% stake, and as also a couple of other private equity investors. Now, the worry here is that whether these investors may or will probably dilute their holdings or sell out altogether. So, that could be an overhang in the stock for a while, but once that is out of the way, clearly the stock is headed for better days. एब्सोल्युटली। एंड श्रीराम फाइनेंस का जो मर्जर प्रोसेस कंप्लीट हुआ दो कंपनियों के बीच, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, तो कहीं ना कहीं सेंटो सिनर्जीज भी प्ले अप होती हुई दिखाई पड़ेंगी, और ऑब्वियसली एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC अब बनती हुई नज़र पड़ सकती है, क्योंकि साइज़ और स्केल मर्जर के बाद आपको दिखाई देगा। बट आपको लगता है यहाँ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के स्टेक सेल का हैंगओवर रह सकता है? Well, at least that is what Morgan Stanley seem to be saying, and it's hard to say one way or the other, given that this again turned into a slightly uncertain market at this point in time. It's also a because market apart from private equity, सेंटो यहाँ पिरामल फाइनेंस के पास भी स्टेक है, और मुझे लगता है वो लोग की इन्वेस्टमेंट जर्नी इतनी खास नहीं रही है श्रीराम ग्रुप के अंदर। पॉसिबल
काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगता है आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो ज़्यादा कुछ अपने स्टेक का कर नहीं पाए, और शायद आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दे कम एंड सेल इनटू द मार्केट एज फार एज श्रीराम फाइनेंस शेयर्स आर कंसर्न्ड. Your last pick, Yatin. सो अगर हम सैंटो बात करें तो दूसरा स्टॉक आज फोकस में था संवर्धना मदरसन सुमी. ऑब्वियसली अगर हम मदरसन की बात करें तो आज इन्होंने एक बड़ा एक्विजिशन जो है अनाउंस किया. वीकेंड पे इसकी डिटेल्स आई, आज सुबह कॉन्फ्रेंस कॉल था, और एक बहुत ही अच्छा इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सर्विस करने वाली एक कंपनी, जर्मन कंपनी जिसका नाम है SAS, SAS, इसको एक्वायर किया. ऑब्वियसली वैल्यूएशन वाइज काफ़ी रीजनेबल एक्विजिशन था, जिसके कारण स्टॉक में आपने मॉर्निंग ट्रेड में 5-6% की स्पाइक देखी. स्टॉक 3-4% के आसपास सेटल हुआ. लेकिन अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पोर्टफोलियो है इसको बड़ा करने में शायद ये एक्विजिशन कंपनी को मदद करे, और इसीलिए मार्केट भी थोड़ा बहुत आज एक्साइटेड रहा. जेफरीज की यहाँ बाय कॉल है, होल्ड रेटिंग है, माफ़ कीजिएगा, टारगेट है 70 रुपीज़. Well, and with that, it's a wrap on this episode of Closing Bell. Thank you for watching. जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And we'll be back with you again at 9 a.m. tomorrow morning. In the meantime, for all news, views, analysis, stay logged on to moneycontrol.com.